Hello everyone, good evening. Very happy new year to all of you. I hope your preparation is on target and I'm wishing you all the very best. And please remember, confidence बिल्कुल high रखना है. अब ये लास्ट टाइम है that you have already finished preparation. अब इस वक्त इम्पॉर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही रहे और आप पॉजिटिवली आगे की तरफ सोचें. तो जो भी हमारे टॉपिक्स हैं आज हम कवर करेंगे सीएनएस, एंडो, नेफ्रो एंड रूमेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो जैसे हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है एपिलेप्सी. कोई भी सीएनएस एग्जाम में, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में सीएनएस में से एपिलेप्सी, स्ट्रोक, अफेजिया, हेडेक, मेनिंजाइटिस, पार्किंसंस, ये 6 टॉपिक हैं जो बिल्कुल आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है. So one is epilepsy, second is stroke, third is your Parkinson's, fourth aphasia, fifth meningitis, and your sixth you want to study about headache. These are very common questions that you want to follow. So all of the following features are of the absence seizures except for. So very right, absence seizures, everything except post-ictal confusion. Very correct. सो आशुतोष ने शुरू किया है हमारा खाता, है ना? तो वेरी गुड. सो वी हैव गॉट, सो वी रिमेंबर, always remember the seizures can be classified broadly into the 2 types, that is our generalized and focal. So we have got generalized epilepsy and we have got the focal epilepsy. Whenever we talk of generalized seizures, the generalized seizures can be further classified into the different types. So generalized multiple areas epileptiform के होते हैं. Most common होता है हमारा GTC. फिर होता है हमारा petit mal, that is absence seizures. And we have got the myoclonic jerks, myoclonic epilepsy. So very important, most common हमारा हमेशा GTC होता है जिसमें टोनिक क्लोनिक फेज है, बट पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन भी होता है. इट इज द एब्सेंस सीजर्स विच इज टिपिकली सीन इन द चिल्ड्रन. इट इज हैविंग टिपिकली प्रेसिपिटेटेड बाय hyperventilation, typically precipitated by hyperventilation. EEG shows 3 Hz spikes are seen on the EEG and there is no post-ictal state. It occurs very small, it lasts for only few seconds but multiple times in the day. Each episode is very small, multiple episodes in the day are going to occur. Yes. So take it forward to the next question. The first line of treatment in the epilepsy is to try the anti-epileptic drugs. We have got a broad range of anti-epileptic drugs which are used in the treatment in all the types of epilepsy except this one, except in the mesial temporal lobe epilepsy. Here the main treatment is going to be surgery. It is the exception to the rule and that is why important in MCQ. It is very important. It is the only epilepsy where surgery is the treatment of choice. Typically, mesial temporal lobe occurs in adolescent people. Adolescence में present करेगा. It will present with as a case of neuro regression. मतलब patient को होता है cognitive decline. उसके मार्क्स, उसके नंबर कम होने लगते हैं. There is a neuro regression which is present. And sometimes superficial electrode may not pick up the problem because it is in the medial temporal lobe epilepsy is present and surgery is the best treatment for the type of epilepsy. And that is why odd man out, we want to remember that. In the first line drug that should be given in the patient with status epilepticus, first line drug that should be given in status epilepticus, everybody. So status epilepticus, when there is a continuous seizures with the loss of consciousness,
There is no recovery of consciousness in between. That is the status epilepticus. This is our medical emergency. And सबसे पहले हमें क्या देना है? Yes, lorazepam. The drug of choice is always going to be lorazepam. So voice disturbance, let me just check from my end. Continuous seizures with the loss of. Hello, hello. Yeah. The treatment of choice is to give lorazepam. So थोड़ा सा maybe echo effect आ रहा है. Let me check. Seizures with the loss of. Hello, hello, hello. Say. Hello, hello. Yeah. The treatment of. Yes. So first line to give is the lorazepam. That is correct. So a medical emergency. Okay. So when the patient is a 65-year-old male, so this is very important now to look for the aphasia. Very, very important. Simply याद रखना है आपको. Aphasia is the defect of language. Defect of language. So there is the sensory that is also called as the Wernicke's area. The sensory which is called as the Wernicke's area, which is connected by the arcuate fasciculus. There is the arcuate fasciculus which is connecting it to the motor area. That is also called as the Broca's area. There is the motor area is present. So depending on where the problem is present. Okay. So still voice problem. So we'll try to just understand when there is a sensory defect. When there is a sensory defect that leads to what is called as jargon speech. The patient is going to speak, but it has got no meaning. So it is a fluent aphasia. It is called as the fluent aphasia, where there is no meaningful speak. Nonsensical grammar is there, but patient is able to speak properly. If there is defect in the motor area, then there is going to be limitation of the speech output. Limitation of the speech output. There will be very, very few words, but it will be meaningful. Very few words, but it will be meaningful words. And this is called as the non-fluent aphasia. Called as the non-fluent aphasia, we can say. And when there is defect in the arcuate fasciculus, in the conduction fibers, this is called as the conduction aphasia. There is going to be the conduction aphasia. It should be present. So 65-year-old person who is brought to the hospital with the complaints of suddenly not making any sense, having nonsensical grammar, but he can speak quickly. That means there is a fluent aphasia is present. This patient, he could speak quickly, he could communicate effectively. Which of the following defect is present? Patient is having a fluent aphasia. Nonsensical grammar is there, but patient is able to speak properly. So correct answer is option number C. Number 5, aphasia which affects the arcuate fibers, just now we discussed, is called as the conduction aphasia. Is called as the conduction aphasia. But agar मैं question दे दूं, which is the most common type of aphasia? Everybody answer. Which is the most common type of aphasia? Is the anomic aphasia. Most common overall type will be the anomic aphasia. But this can be seen also in the old age. It can be part of normal aging also. Can be seen in old age. Can be seen in chronic vascular insufficiency. Chronic vascular insufficiency can be seen in patient with Alzheimer's also. You can get anomic aphasia. Yes, that is the correct one.
So we have got the anomic aphasia is going to be present. That is most common. But arcuate fiber defect is called as the conduction aphasia. Excellent question. So आगे चलेंगे. 26-year-old male, known case of rheumatic heart disease with atrial fibrillation. So एक एक point करते जाएंगे. Which is the most common valve defect in the patient with rheumatic heart disease? The most common valve defect in patient with rheumatic heart disease is mitral stenosis. In the mitral stenosis, which is the most common arrhythmia associated with the mitral stenosis, is the atrial fibrillation. The most common arrhythmia associated with mitral stenosis is atrial fibrillation, which is associated with the dreaded complication. Dreaded complication is embolism. There can be embolism, which can lead to either the stroke or can lead to TIA. Can lead to either an embolic stroke or lead to a transient ischemic attack can be present. So whenever you say patient is having stroke, when will you say patient is having stroke? When there is a focal neurodeficit is present. A focal neurodeficit is present, which is either lasting for more than 24 hours, or if the neuroimaging CT or MRI picks up the infarct when it is positive, then we will call it as embolic stroke. But transient ischemic attack, when there is recovery of the weakness within 24 hours and when the neuroimaging CT scan is normal, that is why we are going to call it as the transient ischemic attack in this question. Correct? Yes, that is the right answer. So please remember, rheumatic heart disease में mitral stenosis में atrial fibrillation, which can lead to embolism, leading to either stroke or transient ischemic attack can occur in this patient. Right. So come on, take it to question number 7. A known case of type 2 diabetes, a 50-year-old male coming with fever, headache and decreased level of consciousness. Whenever there is altered sensorium, fever, we are suspecting the diagnosis of a meningitis is suspected. Stiff neck is present on examination. The CT scan is normal and the CSF analysis is performed. So diagnosis is based on the CSF analysis is very, very important. In the CSF analysis, what are you going to look for? You are going to look for the cell count also and the cell type also. You are going to look for. You are going to look for the presence of the protein level. You are going to look for the presence of the sugar. We are going to look for the CSF pressure. Based on that, we are able to give the diagnosis, and then we can do special test to confirm the diagnosis also. The special test to confirm the diagnosis also can be performed in the patient with meningitis. To reach the diagnosis, we want to ask for this specific test. Chalo. So one by one, in this patient is having a risk factor in form of type 2 diabetes and elderly age group. When the cell count is elevated, that is more than 1000, which is having neutrophil dominant is present, the protein level is elevated, but the sugar level is suppressed, less than 60. The sugar level less than 60 is diagnostic of the pyogenic meningitis. It is diagnostic of the pyogenic meningitis. In acute stages, the CSF pressure may be normal. Pyogenic meningitis, you can identify by doing the CSF culture, and gram stain, you can identify the organism.
So patient is having bacterial meningitis. Bacterial meningitis is present. So option number hai B, not the D, not the A also. Correct answer is bacterial meningitis is present. Correct. But what about TB? TB में क्या होगा? The cell count is only mildly elevated, less than 1000. Predominant type can be lymphocyte. The protein level may be elevated, but the sugar level is normal and the CSF pressure is high. You will think of tubercular meningitis, where you can do adenosine deaminase level are elevated in the CSF. Adenosine deaminase levels are elevated in the CSF. In the fungal, it will be normal. Fungal is also called aseptic. So in fungal and in viral, there will be relatively normal. It looks relatively normal, the CSF. They will look normal, but in the fungal, mainly, example, remember, in cryptococcal meningitis, in the cryptococcal meningitis, you will see that there is grossly elevated pressure. There is grossly elevated pressure is present because the fungus are big in size. They obstruct the CSF system, obstruct the CSF reabsorption, and that is why they have got elevated pressure. Elevated pressure is going to be present. So that is very important clue. Here it is neutrophil dominant with low sugar. These are the two clues which favor diagnosis of a bacterial meningitis for you. Take it forward. Which of the following is not seen in the tubercular meningitis? Which is not seen in the tubercular meningitis is low opening pressure. As I told you, what is the mechanism? That TB is also known as causing basal meningitis. It is also called as the basal meningitis. It causes obstruction of the basal cisterns. Obstruction of the basal cisterns leading to reduced CSF reabsorption. Reduced CSF reabsorption leading to hydrocephalus, increase in the CSF pressure. There is increase in the CSF pressure will be present. So normal sugar. So in the TB, the sugar can be normal or mildly decreased. Can be normal or mildly decreased. It is possible. Mildly decreased. It is possible in the patient with tuberculosis. Sugar may be low in some patient, but as I told you, in pyogenic, less than 60 pyogenic. Mild decrease can be seen in tuberculosis also. So that is why it is not option number A. Right? So correct answer is C, low opening pressure is the correct answer here. Okay, beyond meningitis, come to Parkinson's disease. Very important, extrapyramidal disease. When you get extrapyramidal feature, what are the cardinal features of Parkinson's disease? Motor feature of Parkinson's disease, except for the anosmia. So Dr. Doc talk on a CSF color will be CSF color. Important is what? The CSF color in the TB, it can be what we call, there can be blood stain. The CSF in the pyogenic can be turbid. Turbid in the appearance can be there. And TB, there can be the blood clot. There can be blood clot can be present. Okay. So the all are cardinal motor feature: tremor, bradykinesia, rigidity. This is the triad. There is the presence of tremor, there is bradykinesia, and there is rigidity. Bradykinesia and rigidity are considered the classical triad of Parkinsonism. They are the classical triad of Parkinsonism.
They are going to be present except for the non-motor feature. Non-motor feature, there can be anosmia. Anosmia can be present, which is non-motor. There can be associated insomnia. There can be insomnia. There can be depression. There can be presence of depression. That is what is called as, there is bladder detressor. Bladder detressor, dyssynergia. Dyssynergia. And don't forget this very important non-motor, that is restless leg syndrome. Yes, cobweb phenomena can be seen in the TB also. Restless leg syndrome. This also can be part of the non-motor symptoms. Can be part of the non-motor symptom in patient with Parkinson's disease. There can be mask-like face. There is the mask-like facies. All that can be part of the non-motor symptoms in Parkinson's disease. Right? So another one, extrapyramidal disease. Very important question. Which is the triad of NPH? The NPH can mimic the dementia. It is one of the causes of the dementia. Mimics Alzheimer's. Early onset, it can mimic dementia. So what are the triad of normal pressure hydrocephalus? Chalo. Normal pressure hydrocephalus comes with ataxia, incontinence with dementia. Yes. So there can be ataxia, incontinence and dementia. So Parkinson gait, also called as the festinant gait or the shuffling gait. Festinant gait, also called as the shuffling gait, we are going to call. That is, yes, forward stoop. There is going to be forward stooping is present. Rigidity, there is the low footage, low steppage, and there is the gait is present. Festinant, slow gait is present. Low steppage, very low, they will pick it up. So here we have got the ataxia, incontinence with dementia is the feature. Yes, Hakim Baba tried, that is ataxia, incontinence. Chalo, tell me what is the treatment of choice? What is the treatment of choice in normal pressure hydrocephalus? What will you do? Treatment for normal pressure hydrocephalus. What should you perform? You must go for the VP shunt. Ventriculoperitoneal shunt surgery can offer relief of the symptom. CSF drainage is therapeutic. VP shunt can offer relief of the symptom in patient with NPH. Okay, that is normal pressure hydrocephalus. Yes, Ashutosh, correct answer. VP shunt surgery can be performed. Mohammed, yes, correct answer. Chalo. So some basic concepts must always be revised. Upper motor neuron lesion is characterized by what? What are characteristic of upper motor neuron lesion? Answer, upper motor neuron lesion comes with spasticity. These are all going to be feature of LMN lesions. These are all features of LMN lesion. Right? So there is upper motor neuron comes with spasticity. What are the other correct answer? Along with spasticity, there can be exaggerated deep tendon reflexes. Exaggerated deep tendon reflexes. There could be extensor Babinski sign. Extensor plantar can be present. There is exaggerated deep tendon reflexes. Spasticity is the feature of our upper motor neuron lesion. Yes, that is right. Upper motor neuron lesion. Chalo, take it forward. So question number 12. When a 30-year-old female, है ना, आप लोग सब सोच रहे हो ये इंपॉर्टेंट है क्या टॉपिक? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. आप सोचेंगे मोस्ट कॉमन कॉज
ऑफ एब्सेंटिज्म एट वर्क, मतलब लोग काम से छुट्टी लेते हैं, स्कूल से छुट्टी लेते हैं, कॉलेज से छुट्टी लेते हैं, सबसे कॉमन क्या कहते हैं? मेरे को सर दुख रहा है ना? ये ऐसा कंप्लेंट है जो बाहर से पकड़ में भी नहीं सकते, है ना? बोलते रहोगे सर दुख रहा है, मैं नहीं काम कर सकता हूं. सो इट इज लाइक द मोस्ट कॉमन सिम्टम दैट इज हेडेक. बट हेडेक में द डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है. व्हाट आर प्राइमरी कॉजेस ऑफ द हेडेक? द प्राइमरी कॉजेस ऑफ हेडेक वी मस्ट रिमेंबर, मोस्ट कॉमन तो टेंशन टाइप हेडेक है, followed by the migraine type headache, followed by the cluster headache, followed by the cluster headache, which is relatively rare. इसमें से माइग्रेन के लिए क्या क्या फीचर है? सो पेशेंट इज अ यंग फीमेल, दैट इज द फर्स्ट क्लू. नंबर 2, there must be 5 or more attacks lasting for 4 to 72 hour duration. Each attack should be 4 to 72 hour duration. It must be present for migraine. Also, what should be the nature? It can be unilateral, it can be pulsating, can be associated with the throbbing type of headache. Throbbing type of headache associated with nausea. There can be photophobia. Then we are able to diagnose. So repeated attacks of severe throbbing headache lasting for 4 to 6 hours increases, that is typical of the migraine attack. Typical of the migraine attack. टेंशन टाइप तो भाई दुनिया भर को होता ही है, बट उसका कोई इलाज नहीं है, है ना? उसका इलाज यही है कि आप, है ना, लंबी सांस लो, डीप ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करो, है ना, और टेंशन को हवे में उड़ा दो, है ना? अब हकीम बाबा के बदले हुक्का चला दो, है ना? सो ये हो गया हमारा हकीम बाबा के नाम पे. आप टेंशन को धुएं में उड़ाते चलते जाओ, है ना, लेकिन धुआं साफ वाला रहे, है ना? बिल्कुल पोल्यूशन वाला नहीं करना है, साफ वाला. चलिए, so coming to the next one, the test of choice for diagnosing the Cushing's syndrome. The test of choice for diagnosing Cushing's syndrome, है ना? ऑरा डॉक्टर ओमकार गायकवाड़, है ना? ऑरा क्या होता है? इंस्टिंक्टिव फीलिंग. ऑरा का मतलब होता है इंस्टिंक्टिव फीलिंग ऑफ द इम्पेंडिंग कन्वर्जन. जीटीसी के पेशेंट को पता चलता है कि आज मेरे को फिट आने वाला है. ऑरा का मतलब ये है कि जिस दिन एग्जाम के दिन आप उठते हो, अंदर से एक आवाज आती है ना, आज फटने वाली है, वो उसी को बोलते हैं ऑरा, है ना? उसी को बोलते हैं ऑरा. चलिए, सो टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर डायग्नोजिंग कुशिंग्स सिंड्रोम. डायग्नोजिंग कुशिंग्स सिंड्रोम, वी वांट टू नो, ऑलवेज रिमेंबर, हार्मोन एक्सेस स्टेट जब डायग्नोज करना होगा, जब भी कोई हार्मोन स्टेट डायग्नोज करना होगा, हम क्या करेंगे? सप्रेशन टेस्ट करेंगे. हमेशा हम करेंगे सप्रेशन टेस्ट. यस, सो करेक्ट है. ओवरनाइट लो डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट विल बी द डायग्नोस्टिक वन दैट वी मस्ट डू. सो रिमेंबर द सिंपल रूल, कोई भी एक्सेस स्टेट है सप्रेशन टेस्ट करना है, डेफिशिएंसी स्टेट है तो स्टिमुलेशन टेस्ट करना है, डेफिशिएंसी स्टेट है तो स्टिमुलेशन टेस्ट करना है. ये हमारा फाइनल टेस्ट होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा फॉर आवर थिंग, राइट? चलिए, सो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ. Which of the following is false regarding diagnostic criteria for diabetes mellitus? डायबिटीज के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई? सिम्टम्स विथ रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 200 हो सकता है, प्लाज्मा फास्टिंग मोर देन 126, HbA1 मोर देन 6.5, except postprandial should be more than 200. That is exception to the rule. That is exception to the rule. So more than 200 होना चाहिए. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी.
यस, एवरीबडी गॉट इट राइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यस, नहीं रे, मोर देन 7 नहीं है, मोर देन 6.5 को डायबिटीज कहना है ना? हैप्पी बेसबॉल, है ना? मोर देन 6.5 इज डायबिटीज। ओके, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा? पिट्यूटरी एडिनोमा, चलिए बताइए कौन सा है मोस्ट कॉमन टाइप? मोस्ट कॉमन टाइप इज प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग ट्यूमर। प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग ट्यूमर, नॉट गोनेडोट्रोपिन भाई, गोनेडोट्रोपिन में मत मार्क कर देना। तो मोस्ट कॉमन इज द प्रोलैक्टिनोमा, मोस्ट कॉमन इज प्रोलैक्टिनोमा एंड रेयर टाइप इज द थायरोट्रोपिन। सबसे लीस्ट कॉमन इज द थायरोट्रोप प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ देम आर नॉन सिक्रीटिंग ट्यूमर्स। ओके, सो मोस्ट कॉमन है प्रोलैक्टिनोमा। जब प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, हाइपर प्रोलैक्टिनोमा, व्हाट आर द सिम्टम पेशेंट विल डेवलप? टिपिकली अगर फीमेल पेशेंट है, पेशेंट कैन गेट गैलेक्टोरिया, there can be galactoria, there can be menstrual irregularity, there can be menstrual irregularity can be present, but along with that there can also be compression symptom. Compression by the tumor can lead to the headache, can lead to the visual field defect, can lead to the visual field defect can be present because of the compressive symptoms can be present. चलिए देखते हैं आगे। So when a 35-year-old comes with menstrual irregularity and the galactoria, on and off headache is present and bitemporal hemianopia is present, then what is the most likely diagnosis in this case? She is suffering from a prolactinoma. She is suffering from a prolactinoma. Yes, correct. Secondary amenorrhea. Secondary amenorrhea होगा तो भी definitely we must think, है ना सर? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, यस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेसिक वाले, और हमें उसी में कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आंसर करना है। यस, young woman with secondary amenorrhea and galactoria having bitemporal hemianopia, but ट्यूमर का साइज है 1 सेंटीमीटर से ज्यादा, मैक्रो एडिनोमा है ये, मैक्रो एडिनोमा है ये। तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहते हो, यही सवाल पूछा गया है। माइक्रो एडिनोमा होगा लेस देन 1 सेंटीमीटर, माइक्रो एडिनोमा होगा, फर्स्ट लाइन हमें देना है कैबरगोलिन। बट अगर पेशेंट को कैबरगोलिन से नहीं रिस्पॉन्स आया तो वी कैन गिव ऑल्सो ट्रायल ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, और अगर उससे भी नहीं आया देन वी कैन गो फॉर सर्जिकल अप्रोच, कैन बी डन। बट व्हाट अबाउट मैक्रोएडिनोमा? मैक्रोएडिनोमा में ज्यादा डर है कंप्रेसिव सिम्टम के, बट यहां पर भी क्या देखना है? सीरम प्रोलैक्टिन लेवल। अगर प्रोलैक्टिन लेवल एलिवेटेड है, जो ये केस में है एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल, सो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज टू गिव कैबरगोलिन। बट प्रोलैक्टिन अगर नॉर्मल होता तो फर्स्ट चॉइस वुड हैव बीन सर्जिकल अप्रोच। So here the answer is cabergoline, not bromocriptine. We must choose cabergoline. Long acting preparation would be the correct answer. Long acting would be correct answer. Cabergoline is preferred because it is longer acting as compared to bromocriptine. That is why first choice, not bromocriptine, it is cabergoline. So correct answer A choose करेंगे, कैबरगोलिन को नहीं मार्क करेंगे। वो तभी हम यूज करते हैं जब पेशेंट है ना शॉर्ट एक्टिंग है, प्रेग्नेंट होना चाहती है, तब सोचना है, अदरवाइज हम कैबरगोलिन को प्रेफर करेंगे। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया मोस्ट कॉमन, यंग वुमन है तो भी, अनलेस दे आर आस्किंग ना कि प्लानिंग प्रेगनेंसी, तब हम चूज कर सकते हैं। यस, चलिए
So microalbuminuria, earliest finding of the CKD, which is the earliest finding of the CKD. बताइए, what is the quantity of microalbuminuria? It is the 30 to 300 milligram. Yes, 30 to 300 milligram is present. 30 to 300 milligram is considered microalbuminuria. Correct answer. Okay, चलिए. The cause of dysmorphic hematuria, ये आपको पढ़ाया गया. Dysmorphic hematuria क्या बताता है? Situs glomerulonephritis. ये बता रहा है साइटिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. साथ में आ गया नॉर्मल सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विथ नॉर्मल सीरम कॉम्प्लीमेंट दो ही कंडीशन में होते हैं. अगर पेशेंट को नॉर्मल सीरम कॉम्प्लीमेंट है तो दो ही कंडीशन हो सकते हैं. अगर अडल्ट पेशेंट है तो मार्क करना है आईजीए नेफ्रोपैथी. आईजीए नेफ्रोपैथी. और अगर चाइल्ड है तो मार्क करना है एचएसपी. करेक्ट आंसर इज आईजीए नेफ्रोपैथी इन अडल्ट पेशेंट. इट इज ऑलवेज आईजीए नेफ्रोपैथी, नॉट पीएसजीएन. क्यों यूज कर रहे हो, क्यों चूज कर रहे हो पीएसजीएन? अगर पेशेंट को कॉम्प्लीमेंट लेवल लो है, सीरम कॉम्प्लीमेंट लेवल लो है, इट कैन बी सीन इन बोथ post-infective cause and autoimmune disease. In the post-infective cause and in autoimmune disease ये हो सकता है. Most common है PSGN, most common है lupus SLE. So यहाँ पर आंसर है IgA nephropathy. IgA nephropathy we want to mark. चलो. Question 20. All are following are findings of pre-renal AKI except for pre-renal AKI में मतलब क्या है? Reduced renal blood flow. Reduced renal blood flow causes RAS activation. RAS activation causes increased sodium and water retention in the body. Because of increased sodium water retention, patient develops concentrated urine where the urine osmolarity is more than 500. Because sodium is absorbed, urinary sodium becomes less than 20 milliequivalent, and because of that FeNA will become less than 1%. FeNA will become less than 1%. Exception to the rule. FeNA will be less than 1% होना चाहिए in patient with pre-renal AKI. FeNA more than 4% is typical of the tubular necrosis. Is typical of the acute tubular necrosis. The diagnosis will be given. Is the acute tubular necrosis. आंसर हमें चूज करना है. Yes. चलिए आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को. 21. मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन एसएलई. पूरा रूमेटोलॉजी में एंटीबॉडी का खेल है. एंटीबॉडी को बीमारी के साथ मैच करना है. एसएलई में मोस्ट स्पेसिफिक कौन सा है? एंटी स्मिथ है, जबकि वो रेयर है, बट फिर भी हम उसी को थियरी में मार्क करेंगे. मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी पूछेंगे तो आंसर एंटी स्मिथ मार्क करेंगे, जबकि प्रैक्टिस में तो हम एंटी डीएसडीएनए ही प्रेफर करते हैं, बट एंटी स्मिथ हमारा मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा. बिल्कुल सही जवाब. ओके चलना है आगे. ये फॉलोइंग आर आनका मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम एक्सेप्ट फॉर. चलिए आनका मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस कौन से होते हैं? हमारा वेजनर्स, ऑल्सो कॉल्ड ग्रैन्युलोमैटस पॉलीएंजाइटिस. It is also called as the granulomatous polyangiitis. ये बिल्कुल अनका मीडिएटेड है. Church also called eosinophilia with the GPA, granulomatous polyangiitis.
Microscopic polyangiitis, also P ANCA positive. All are except HSP. HSP are our ANCA negative vasculitis. HSP याद रखना है, बेचेट्स याद रखना। ANCA नेगेटिव डिजीज में HSP और बेचेट्स डिजीज याद रखना है। ये दोनों हमारे ANCA नेगेटिव वेस्कुलाइटिस में आते हैं। करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए। सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या डाउट आ गया? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या एक्सप्लेन करना है? डॉक्टर सुबू प्लीज बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 20 में फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम कम होना चाहिए, हम तो वो बस पैथोफिजियोलॉजी लिखा हुआ है, एक बार आप उसको फिर से रीड कर दीजिए। When 40-year-old female comes with difficulty in eating due to persistent dry mouth and dryness of eyes, इसको बोलना है सिक्का symptom. Sicca symptom is present in the middle-aged lady. We also call it as the Sjogren's syndrome. We also call it as the Sjogren's syndrome. We are going to call this. Yes. So सिम्टम रूमेटोलॉजी में सिम्टम है एंटीबॉडी, ये दो चीज को देखते जाना है। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एंटीबॉडी को देखते जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करना है। ऑल आर ग्रैन्युलोमेटस। ग्रैन्युलोमा का मतलब होता है टी सेल मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस एक्सेप्ट फॉर। All are the T cell mediated vasculitis except for। चलिए इसके लिए मैं इंतजार करता हूं आपके जवाब का, है ना। ऑल आर, ANCA पॉजिटिव पता चल गया। टी सेल मीडिएटेड कौन से होते हैं? 4 होते हैं। टी सेल मीडिएटेड में है GCA, हमारे पास है टाकायासु, हमारे पास है वेजनर्स और हमारे पास है चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम। T-cell mediated vasculitis are the 4 in number. Exception is the PAN. PAN is the immune complex mediated disease. PAN is the immune complex mediated disease. MCTD is the mixed connective tissue disorder. It is the mixed connective tissue disorder, which is an example of overlap syndrome, जहां पर मिक्स्ड बोथ ANA एंड RA फैक्टर आर पॉजिटिव। बोथ ANA RA फैक्टर आर पॉजिटिव, इसको बोल देना है MCTD, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। Yes, PAN is immune complex mediated disease and that is exception to the rule. चलिए, सो ब्रिंगिंग अस टू लास्ट क्वेश्चन फॉर आवर प्रेडिक्शन इन रूमेटोलॉजी। वेस्कुलाइटिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसमें कोई शक ही नहीं है। बट 25 वाला क्वेश्चन बताइए, एक फार्मैक रिलेटेड। विच इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस? हमें पता है डीमार्ट देना है, बट कौन सा डीमार्ट देना है? मोस्ट पोटेंट वाला याद रखना है आपको और सेफेस्ट वाला याद रखना है। एस्पेशली अगर पेशेंट प्रेग्नेंट होगी तो बस 2 ही क्वेश्चन आए हैं इतने सालों में। मोस्ट पोटेंट कौन सा है और सेफेस्ट कौन सा है? फर्स्ट लाइन मोस्ट पोटेंट इज ऑलवेज मीथोट्रिक्सेट। वेरी गुड, मोस्ट पोटेंट इज ऑलवेज मीथोट्रिक्सेट एंड प्रेगनेंसी में हमेशा सेफ होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थेरेपी, हमेशा होता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थेरेपी। यस, so this is our rheumatology done. so याद रखना है एग्जाम के दिन फुल कॉन्फिडेंस लेके जाना है, कोई भी सेल्फ डाउट नहीं रखना है। फुल कॉन्फिडेंस प्लस 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 ऑन द डे ऑफ एग्जाम, कोई भी शक नहीं रखना है। सेल्फ डाउट को निकाल के फेंको और सिर्फ एक ही याद रखना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, काम माइंड के साथ जाना है। ओके, काम माइंड के साथ जाना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिपरेशन आप सबने किया हुआ है, बस अब उसका फाइनल आपको एक टेस्ट देना बाकी है। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय
और बिल्कुल रिलैक्स्ड रहना है, स्ट्रेस को दूर रखना है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मेडिसिन का रिवीजन कैसे करें डॉक्टर आशिक? अब मैंने जैसे कहा, ये ऐसा कोई गोल्डन रूल है नहीं, कुछ टॉपिक फेवरेट हैं जैसे मैंने बताया ये, और हर फैकल्टी ने अपने अपने टॉपिक के साथ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। लास्ट वीक रिसोर्स याद रखना है, पीवाईटी करना है, पीवाईक्यू करना है, बस लास्ट वीक में, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है। चलिए, सो एमसीटीडी में क्या बताना है डॉक्टर राहुल भारद्वाज? क्या बताना है आपको एमसीटीडी के बारे में कि 23 क्वेश्चन में क्या रह गया? एमसीटीडी वो जोग्रेंस नहीं है यार, यहां पर कैसा है, सिर्फ सिक्का के सिम्टम्स है ना, जोग्रेन के सिम्टम है। पेशेंट को जब दोनों तरफ है, दो आरए फैक्टर भी पॉजिटिव होगा तब ये एमसीटीडी बनेगा। यहां पर ओवरलैपिंग सिम्टम, पेशेंट को सिम्टम भी होने चाहिए, ल्यूपस के सिम्टम है, साथ में मायोसाइटिस के सिम्टम है, साथ में आर्थराइटिस का सिम्टम है, तब हम इसको बोलते हैं ओवरलैप सिंड्रोम। ठीक है, चलिए, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।